said how difficult motherhood is. It has a lot of demands on your time and everything, and you have to think so much. As a celebrity mom, could you tell us, is it a very challenging role, especially as a celebrity mom, shielding your I think it is. It's a challenging role overall. I think when you become mothers, for the first time especially, you have that sense कि पूरी दुनिया का जो वेट है वो आपके कंधों पे है, और इस बच्चे को जो भी सिखाना है वो आपको सिखाना है. अगर बड़े होकर आप चाहते हो कि ये सीरियल किलर नहीं बन जाए, तो उनको आपको ही सिखाना पड़ेगा जो गलत और सही में फ़र्क है. जो लाइन होती है, वो रेखा जो होती है, वो उनमें नहीं होती है. वो रेखा आपको ड्रॉ करनी पड़ती है. आपको उनको बताना पड़ता है कि ये बेटा ये सही है और ये गलत है. तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और ज़्यादातर हमारे देश में अगर देखा जाए तो आज तक अगर कोई कुछ गलत करता है आपके सामने, तो पहली सोच यही होती है कि बेटा तुझे अपनी माँ ने ठीक से नहीं सिखाया क्या. ये हमारे देश की, हमारी सोसाइटी की सोच है. ये दुनिया की भी सोच है somewhere down the line. So as mothers, yes, it's very important. We have that responsibility on our shoulders that we have to bring up our children properly, and we have to bring up our children to be. It's at least for me, it was the scariest thought that I hope that I'm teaching my daughter right. I hope that I'm doing the right things with her. I hope कि मेरी सीख इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि अगर दुनिया ने उनको प्रेशर भी दे दिया तो वो उस प्रेशर के सामने खड़े होके सीधे खड़े हो सकेंगे और सीधे और अच्छे इंसान बन सकेंगे. My question for you is, you've seen the whole gamut of motherhood from 0 to 12. Which stage do you think was the most challenging, and what helped you overcome those challenges? I think all of it is challenging, to be honest. It's challenging in different ways. Initially, it's all about working on sleep deprivation, and we all know that sleep deprivation kills you much faster than any other food deprivation as well. So, as far as bringing up children is concerned, it depends. Their needs keep changing. You keep changing. You have to adapt constantly and think constantly. Think up clever answers constantly for the very, very, very clever questions that your children come up with later. And as like for instance, my daughter is 11 today, and I don't think she needs me any less than when she was 3 months old or 4 months old. Yes, I can probably leave her today for an hour or two, or maybe even a day or two, and I don't think that she'll go very wrong, but she misses me and she needs me on a daily basis, and that I don't think is going to change. That I really don't think is going to change. Just needed to know कि maybe around 20-25 years back, हमारी जो celebrity mom होते थे, actually the Bollywood की heroine, were not very open in talking about their marriages and motherhood actually, बहुत खुलेआम नहीं बात करते थे in fact. Nowadays, आजकल की जो heroine होती है वो they are like more open. How do you see this changes in fact? Do you believe first in that? To be honest, I think it has to do with how society has changed. Society बदल गई है, तो हम भी बदल गए हैं उसके साथ. माएँ जो पहले करती थी आज नहीं करती हैं, आज जो करती हैं वो पहले नहीं करती थी. As far as बात करने की बात जाए तो I think people they used have to asked. hide actually. Maybe you could marriages होते थे लेकिन हाँ, you क्योंकि not talk more about. it was considered a taboo. उस वक्त लगता था कि अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपके बच्चे हो गए हैं, तो you're over the hill. आपको काम नहीं मिलेगा, आप पिक्चरिंग नहीं कर सकोगी. The way people look at you will change. But today, thank God, the time has come when it's not considered that, when people are not looking at it with such a narrow-minded focus. So I think, yes, we are living in enlightened times. And do you feel that nowadays diaper का नाम Huggies हो गया because lots of people I hope so. I hope कि diapers का नाम Huggies हो गया है. Hopefully मेरी वजह से. My question to you is, being a celebrity mom, you have to step out of your house very often. So do you get those guilt pangs leaving your kid behind with somebody? And how do you manage with that guilt? Most of the mommies would have this problem. I do. But if you look at my schedule in the last about 11 years since I've had my kids, I don't step out as much as anybody else does. In fact, I'm probably the one who steps out least. So you can say my guilt is the least as well. As far as the guilt is concerned, I don't think that ever goes away. You will always feel guilty about your children. All you can do is forgive yourself each and every day and not take it too seriously at least. Just extension to that gentleman's question, when it comes to motherhood, since motherhood is considered as a natural gift to a woman,
and it's something which makes a woman complete. But when it comes to Bollywood, the Bollywood actresses, they are quite hesitant of carrying the big tummy, and they're just quite unwilling of delivering baby. What do you like to say about this? Well, I'd like to say that I think it applies to women everywhere. I think once we get pregnant and जब इतना साइज इतना बड़ा हो जाता है तो हमको लगता है कि अननेचुरल है, हमको लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जो पहले लगते थे. तो ये मुझे लगता है कि औरतों की फितरत है इसको. आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद बॉलीवूड एज सच, बट येस, क्योंकि हम लाइमलाइट में हैं और क्योंकि हमेशा हमको फोटोग्राफ किया जाता है और पूरी दुनिया हमको देखते रहती है, तो हाँ, हमारी इनसिक्योरिटीज़ उनके दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं. बट आई थिंक इट्स women everywhere, really, honestly. I think once you reach that size, once you're like 7 months, 8 months pregnant, or even for that matter 6 months pregnant or 5 months pregnant, you start feeling a little fat and you start feeling a little ugly. And maybe not ugly, but you start feeling a little fat. Clothes don't fit you the way they used to. And it's temporary. आपको पता है कि ये सब खत्म होने वाला है थोड़े महीनों में, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, तो थोड़े महीनों की बात है, चलो घर पे ही बैठ जाती हूँ थोड़ी दिनों के लिए, बाहर नहीं निकलती. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मदरहुड जो आपने कहा, जैसे अपने बेबीज़ के साथ कहते हैं कि आप शूटिंग करते हैं, उन्हें कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरा आपसे सवाल है, जो युग तो उन्हें आप कैसे कन्विंस करते हो? वो शरारती है, उन्हें काम करवाने के लिए, बातें मनवाने के लिए क्या क्या किया है आपने? मैंने बहुत कुछ किया है उसको कन्विंस कराने के लिए एक्चुअली, लेकिन मैंने उसकी ट्रेनिंग जब वो मेरे पेट में था तभी शुरू कर दी थी. तो whenever I felt a kick or something, कुछ ज़्यादा stop it right now, you've got to listen to me, तो मैंने उसकी ट्रेनिंग उसी वक्त से शुरू कर दी थी. और fortunately, touch wood, I think both my children are pretty good that way. Yes, they may throw a few tantrums once in a while, but they do listen to me at the end of the day. That's my firm rule at home. मैं अभी फ्रेम करके रखने वाली हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है. Whatever mama says, you have to do whatever your mother says, whether, and instantly. There's nothing, no time limit and all that. Instantly you have to do exactly the way I say it. So वो रूल मैंने मतलब बचपन से बच्चों को सिखा के रखा है. मैम, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अदरवाइज जैसे घर में हस्बैंड की चलती है तो आपके घर में आपकी किसकी चलती है? मेरे घर में मेरी ही चलती है. मैंने अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है. अजय सर की बिल्कुल नहीं चलती है थोड़ा मैंने मतलब खुश रखने के लिए मैं दे देती हूँ उनको थोड़ा सा, इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है. और बच्चे होने के बाद तो और भी मेरे बच्चों ने उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है. All right, thank you all so much.